Hello students, welcome to the online classes of Human Resource Management. In our previous video, we discussed about the various training methods like off-the-job training method and on-the-job training methods. In this video, we are going to start a new topic or a new chapter that is performance appraisal. This is Dr. Vineet Mathur, Associate Professor, Institute of Management Studies, SPJS Rampuria Jain College, Bikaner. Let us discuss about performance appraisal and what are the objectives of the performance appraisal. First of all, let us define what exactly is performance appraisal. Performance appraisal is basically assessment of individual's performance against well-defined benchmark. देखिए किसी भी एम्प्लॉय कैंडिडेट के प्रमोशन के लिए, उनके सैलरी हाइक के लिए या सपोज कभी हमको ले ऑफ कंडक्ट करवाना ऑर्गेनाइजेशन में या कोई न्यू चैलेंजिंग असाइनमेंट हमको किन्हीं एम्प्लॉयज़ को देना है, तो बिफोर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ डिसीजन लाइक प्रमोशंस, ट्रांसफर, annual salary increase, or it may be some kind of assignment, we need to evaluate, we need to assess the performance of employees. And for the assessment of employee, we must have some kind of standard or some kind of benchmark against which we can perform the appraisal or evaluation process. So performance appraisal is a systematic evaluation of individual of his performance on the job, and also we are looking for the potential of that candidate, whether that employee is suitable for some challenging task or for development. And performance appraisal is a comparative study of current performance and employees past performance. And definitely, as I said, these appraisals are performed on the basis of some benchmark or some standard. And importantly, yes, performance appraisal is must for the organization, and organization is going to communicate back the result of appraisal to the employee also, बिकॉज एम्प्लॉय को भी अगर हम इनपुट देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में ये कमी थी, ये अच्छा था, तो एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन दैट, तो हमको उनका अप्रेजल वापस से एम्प्लॉय को भी बताना है. एंड समटाइम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर आल्सो नोन एज एम्प्लॉय इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, or sometimes performance evaluation and results appraisal. These are various name of performance appraisal. Now let us discuss what are the different objectives of performance appraisal. The first and most important objective of appraisal is that we need information to decide about promotions and salary hike decisions of the employee. तो एनुअल अप्रेजल मस्ट है, क्योंकि साल में एक बार जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट करना होता है,
और देखना होता है प्रमोशन के लिए कौन कैंडिडेट सुटेबल है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज for promotions and for salary hike decision. Next, normally every job has some kind of probation period, जिसके अंदर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो टेम्परेरी सर्विसेज होती हैं जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। एंड आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड देयर इज ए सिस्टम ऑफ अप्रेजल। Thereafter only services are confirmed as permanent. So to make decision about from probation period to confirmation, we need a appraisal system. So second objective is for the confirmation of a probationary employee to the permanent. And one important thing is that if we have conducted some kind of HR programs like selection, training and development programs or transfers, then if we want to evaluate the training program, that means impact of that training program on employees performance. तो हम देखना चाहेंगे कि हमने एम्प्लॉयज पे जो पैसे खर्च किए या जो टाइम स्पेंड किया और एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग दिलवाई हमने, उसका क्या इम्पैक्ट एक्चुअल में परफॉर्मेंस में आया या नहीं आया। सो फॉर दैट evaluation of HR programs we need performance appraisal of employee, by which we can evaluate the actual impact of our training program on the performance of employee. And one more thing is that annual appraisal is a very good organized system to communicate weaknesses and strength of employee to them. That means there will be a improved communication between the senior officers and the subordinate. अगर सीनियर ऑफिसर्स को कुछ लगता है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में कुछ था या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अप्रेजल के टाइम ये बात उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इवन जब वो अप्रेजल का रिजल्ट उनको शो करेंगे उस समय वो बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में ये कमी थी और यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड वन मोर थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल गोल एंड कंसर्न्स। As we can see that performance appraisal is somehow a communication between the employee and the senior officers. At that time sometimes employee can inform their personal goal and concerns to the top level management कि हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हमको प्रमोशन नीडेड है या नहीं है, या कोई पर्टिकुलर स्किल्स की उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो उस बारे में ड्यूरिंग द अप्रेजल मैनेजर्स को बता सकते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। We can categorize these different objectives of performance appraisal into different category. Like one important category is documentational use of this appraisal, because अपन बोल सकते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए भी अपने को एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिस एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं हुआ या फिर किसी को सैलरी हाइक नहीं मिला या किसी को फायर कर दिया, तो वो कोर्ट में जा सकता है कि भाई मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ।
तो अपने पास में एक प्रोसीजरल एंड एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हाँ भाई कंपनी ने कंडक्ट करवाया था अप्रेजल और उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एचआर डिसीजंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट अपने पास में एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो देयर लाइक टू डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग नीड्स कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट कैन वी कैन आइडेंटिफाई ओनली आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ दैट पर्सन that his or her performance was not good enough, so there is need of some training program, and this is going to be decided by the performance appraisal. And as well as after that training program we also need performance appraisal to evaluate whether there is a change in performance or not after the training program. So for organizational objective we also need performance appraisal, and for administrative use definitely for salary and promotion decision and for layoff decision, and to identify the poor performers we need appraisal program. And also for the identification of personal need, individual personal need, we also need performance appraisal. And performance appraisal is a kind of communication between the managers and the subordinate. Now we are talking about again and again that performances are evaluated against some kind of benchmark or some kind of standards. So what are those benchmarks? The first one is job knowledge. That means employees knowledge about their job, what kind of job they are performing related to that their knowledge. And definitely qualitative output and quantitative output, whether they have achieved the targets or not. And definitely quality of work is also important and quantity of work is also important. Initiative skill, leadership skills, and you can say the cooperation abilities, how much they are interdependent or how much they are independent, their behavior with the subordinates and other colleagues and managers. These are also part of performance appraisal benchmarks. Their decision making power, and you can say their behavior towards the society, their activities towards the society, how much socially responsible they are, how much spontaneous they are. These are few benchmarks or standards those can be used for the performance appraisal. Steps involved in performance appraisal. Performance appraisal process involved basic three steps. The first one is defining the job and setting up the standards. Then second step is obviously the performance appraisal, and the third step is communicating back feedback to the employee. In the first step, at the time of appointment or after the appointment of employee, we need to clear about the performance appraisal system to the subordinates, and we need to inform that about the job standards and the duties.
दैट मीन्स एम्प्लॉय को ये क्लियर होना चाहिए ऑन व्हाट बेसिस उसका अप्रेजल होगा, क्या क्राइटेरियाज हैं, और अप्रेजल कब होता है, साल में एक बार है या 2 बार है, और क्वार्टरली अप्रेजल है, क्या क्या बेंचमार्क्स हैं, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारा एम्प्लॉय को क्लियर होना चाहिए. एंड देयर आफ्टर द मेन प्रोसेस दैट इज परफॉर्मेंस appraisal. And there are various methods of performance appraisal, different kind of rating systems, and we are going to discuss about those different performance appraisal methods in our next video. Field review method is there, ranking method is there, comparison method is there. There are some few methods. And after the performance appraisal, the important thing is, yes, definitely the managers are going to use those information for the promotions and the salary hike, but you need to inform, you need to feedback your employee also about the weaknesses और जो भी आपको कम लगता है कि परफॉर्मेंस कहीं पे वीक था. एंड यहाँ तक नहीं, इसके आगे भी आपको लगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, तो यू नीड टू प्लान सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉय, जिससे नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल तक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके. There is important role of raters who are going to evaluate the performance. That means वो कौन लोग होंगे जो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेंगे, अप्रेजल करेंगे. तो फर्स्ट वन इज तो डेफिनेटली जो उनके इमीडिएट सुपरवाइजर हैं, जिनके साथ में एम्प्लॉय का रूटीन में काम होता है, दैट इमीडिएट सुपरवाइजर और मैनेजर हम बोल सकते हैं, वो फर्स्ट रेटर होंगे. एंड इवन जो उनके पीयर्स हैं, जो उनके साथ में काम करते हैं, सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं, वो लोग भी अप्रेजल में पार्ट ले सकते हैं और वो रेटर्स बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज पॉलिसी. द नेक्स्ट वन इज sometimes subordinates are also involved into performance appraisal, क्योंकि बहुत बार हमको ये देखना होता है कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, वो अपने से सीनियर लोगों के साथ में अच्छा होता है, लेकिन सबॉर्डिनेट्स के लिए वो बहुत बुरा बिहेव कर सकते हैं. तो that's why few companies are using this thing also. They are involving subordinators as raters during the promotions and salary hike decisions. And even self appraisal is also there, जिसमें एम्प्लॉय को हम चांस दे रहे हैं कि वो खुद की परफॉर्मेंस को जो है वो रेट करके कंपनी को बताए, बिकॉज खुद के बारे में हम सबसे ज़्यादा बेस्ट जान सकते हैं कि हम लोगों के अंदर क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, कौन सा एरिया में परफॉर्मेंस वीक रह गई. तो सेल्फ अप्रेजल इज आल्सो पॉसिबल. एंड देयर मे बी ए चांस कि कोई हेड ऑफिस से या फिर जोनल ऑफिस से एक कोई टॉप पोजीशन ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड समटाइम्स रेटिंग कमिटीज आर आल्सो यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई साइकोलॉजिस्ट है या फिर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं रेटिंग के लिए. एंड इवन देयर इज ए अप्रेजल मेथड दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम. उसके अंदर तो जो है वो जो हमारे रूटीन कस्टमर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, इवन समटाइम्स फैमिली मेंबर्स जिनसे एम्प्लॉय का इंटरेक्शन होता रहता है, तो उनको भी हम चांस दे सकते हैं फॉर
बिकमिंग ए रेटर, जिससे वो बता सकें कि इस एम्प्लॉय का बिहेवियर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में कैसा है. So these are different raters who are going to be part of performance appraisal.